Okay, sir. Thank you. First of all, a very good evening to all. I am Dr. Syeda Najeem Asra, Assistant Professor in the Department of Political Science, Maulana Azad College of Arts, Commerce and Science, Aurangabad. Firstly, I am very thankful to Dr. Bedkar sir for giving me an opportunity to deliver my lecture in their World Record series. इट इज अ बिग थिंग सर कि आपने इतने बड़े लेवल पर इतनी अच्छी वर्ल्ड रिकॉर्ड सीरीज एक पूरा टोटल मुकम्मल हर फील्ड का एक लेक्चर यहाँ पर हमें देखने और सुनने के लिए मिल रहा है इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर टुडे I am giving my lecture or presentation on the topic of Constitution of India and the fundamental rights. Okay. देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है ये फंडामेंटल राइट्स का मालूम होना हर सिटीजन के लिए बहुत जरूरी है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी हैव knowledge about the fundamental rights. What are the fundamental rights which is given by our constitution? The original text of the Indian constitution consists 395 articles spread in 22 parts and 8 schedule. Okay, but now it become a very lengthy constitution. First, the important feature of the Indian constitution is that it is a very lengthy constitution and a very descriptive constitution. Now we have 470 articles spread in 25 parts and 12 schedules and 105 105 अमेंडमेंट जो है अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुए हैं सबसे पहले टुडे हम यहाँ पर एक सेकेंड सर नेक्स्ट स्लाइड विजिबल ओके 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 okay in this presentation we describe about the what are the fundamental rights okay features of fundamental rights amendability of fundamental rights importance in fundamental rights and the types of fundamental rights which is given by our constitution. Okay sir. What is the fundamental rights? The fundamental rights are the basic human rights which is enshrined in the constitution which is called as a fundamental rights.
These rights ensure the fullest physical, mental, and the moral development of every citizen. They include those basic freedoms and conditions which alone can make life worth and living. Fundamental rights guarantees a feeling of security among the minorities in the countries. It also provides the standard of conduct, citizenship, justice, and the fair play. They serve as a check on the government. Various social, religious, economic, and political problems in our country. It's make fundamental rights important. The part third of our Indian Constitution आर सेफ फॉर दी फंडामेंटल राइट्स. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के लिए रिजर्व किया गया है. आर्टिकल नंबर 14 to 32, the major part of our constitution are reserved for the fundamental rights. These rights are conferred about the citizens of India. For the constitutions tell that these rights are inviolable. Right to life, right to dignity, right to education, all come under the one of 6 fundamental rights. We have a 6 fundamental rights, as you can see on the slide. A right to equality, article number 14 to 18. Right to freedom, article number 19 to 22. Then a right against exploitation, 23 to 24. Right to freedom of religion, article 25 to 28. Cultural and educational right, article number 29 to 31. And the right to constitutional remedies, article number 30 to 35. These 6 fundamental rights are given by our constitution. Now firstly we discuss about why are they called fundamental rights. There are 2 reasons behind the what are the called fundamental rights. Firstly, it enshrined in the constitution which is guarantees them. ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है और ये हमें गारंटी देता है कि वी ऑल हैव अ फंडामेंटल राइट्स. द सेकंड वाज इट इज अ जस्टिसेबल राइट्स. इट इज enforceable by the court. In the case of violation, person can approach a court. Justiciable means that these rights are, if these rights are violated by the government or any other else, the citizen can approach to the Supreme Court and the High Court for protection of their fundamental rights. These first justiciable present a significant role in the fundamental rights or in our constitution. There are many features of fundamental rights, but in our presentation, we discuss about some features of fundamental rights. The first one is that it is different from ordinary legal rights in the manner in which they are enforced. If a legal rights is violated, the aggrieved person cannot directly approach to the Supreme Court by passing the lower, or should फर्स्ट अप्रोच टू दी लोअर कोर्ट कि अगर किसी के कोई राइट्स, किसी के फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं तो ऐसे में आप सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले आपको ये अधिकार है कि आप पहले लोअर कोर्ट के अंदर उसको प्रेजेंट करें, देन आफ्टर कम इनटू दी सुप्रीम. द सेकंड इज fundamental rights are available to all the citizens while the rest are for all persons, citizens and foreigners. The third, fundamental rights are not absolute rights. They have reasonable restrictions. कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें फंडामेंटल राइट्स तो दिए हुए हैं, लेकिन कुछ पाबंदियों के साथ हमें दिए हुए हैं. कुछ रेस्ट्रिक्शंस हम पर दी गई है कि भाई हम इन फंडामेंटल राइट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, वी कैन यूज इट, बट इन सम रेस्ट्रिक्शंस कि वी not cross the limits of our rights, which means they are subject to the condition of state security, public morality, decency, and friendly relations with foreign countries. The fourth one is they are justiciable. As we can say that
implying they are enforceable by the courts. People can approach Supreme Court directly in case of the violation of fundamental rights. Fundamental rights can be amended by the Parliament by the constitutional amendment procedure, but only if the amendment does not alter the basic structure of the Constitution. Fundamental rights can be suspended during the national emergency, but the rights guaranteed under Article number 21 and 20 cannot be suspended. The application of fundamental rights can be restricted in an area that has been placed under the martial law or the military rule. There are 6 fundamental rights which are given by the Constitution. Actually, at the making of the Indian Constitution, there is a 7 fundamental rights. Okay, right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right to constitutional remedies, and the 7 is that right to property. But right to property was eliminated from the fundamental rights by the 44th Amendment Act of 1978. Now we have a 6 fundamental rights. Article number 14 to 18 are reserved for the right to equality, 19 to 22 right to freedom, Article number 20 to 24 right against exploitation, Article number 25 to 28 right to freedom of religion, 29 to 30 cultural and educational rights, and the 32 are reserved for the right to constitutional remedies. So first we discuss the right to equality. In right to equality, there is a fifth right. There is a fifth right which is given by the Constitution in Article number 14, equality before law and equal protection of law. Firstly, we discuss right to equality. What is mean by right to equality? Right to equality means that everyone should be equal before the law. No discrimination on the basis of the caste, religion, sex, and etc. It ensures equal employment, equal opportunity in the government, and ensure against discrimination by the state in the affairs of the employment. Article number 14. Article number 14, equality before law and equal protection of the law. In this series, we can see that state shall not deny to any person equality before law or equal protection of laws within the territory of India. It means that on grounds of religion, caste, sex, or the place of birth. Article number 15 is reserved for the prohibition of discrimination on the grounds of religion, caste, sex, or place of birth. This is a very important article, article number 15. ये आर्टिकल हमें बताता है कि हम किसी भी सिटीजन के साथ उसके मजहब को लेकर, उसकी जात को लेकर, उसके कास्ट को लेकर या उसके रीजन को लेकर, उसके प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर हम किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ नहीं कर सकते. अगर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन कोई सिटीजन के साथ होता है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है या फिर हम सुप्रीम कोर्ट में ये अपील कर सकते हैं. ये हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया हुआ है. Article number 16. Article number 16 reserved for the equality of opportunity in the public employment. Our constitution guarantees equality of opportunity in the matter relating to the employment or the appointment of public services in all citizens. There shall be no discrimination on the basis of the religion of caste, sex, place of birth in matters relating to the employment in the public services. Article number 17, abolition of untouchability and prohibition of its practices. The Constitution abolished
untouchability, and its practice in any form is forbidden. Article number 18, abolition of the titles. This article is the most important in our fundamental rights. This provision has included the constitution to do away with the titles like Rai Sahab, Rai Bahadur have been conferred by the British on a few Indians as a reward for their effective cooperation to the colonial regime. The practice of conferring title like this against the doctrine of the equality before the law. The President of India can confer civil and military rewards on those individuals for their services and achievement, such as Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Shri, Veer Chakra. But these cannot be used on टाइटल्स. ये टाइटल्स है, ये हमको मिलते हैं, लेकिन ये टाइटल्स नहीं है. टाइटल्स वो थे जो ब्रिटिशर्स सिटीजन्स को देते थे. इससे एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सिटीजन्स के अंदर क्रिएट हो जाता था. इस वजह से हमने आर्टिकल नंबर 18 के तहत इसको एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स को एक्सेप्ट किया है, ताकि सिटीजन्स के बीच में किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो. कम टू द नेक्स्ट, दैट इज अ right to freedom. Article number 19 to 22 reserved for the right to freedom. Right to freedom consists article number 19, protection of 6 fundamental rights regarding to the freedom. That is the freedom of speech, freedom of expression, freedom of assembly without arms, freedom of association, freedom to practice any profession, freedom to reside in any part of the country. These 6 rights are given by the Constitution. कि हमें ये अधिकार दिया हुआ है, हमें ये हक दिया हुआ है कि हम अपने एक्सप्रेशंस को जाहिर कर सकते हैं. फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हम किसी भी प्रोफेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से. हमें कोई पाबंदी या कोई रेस्ट्रिक्शंस हम पर आयद नहीं किए हुए हैं या कोई इम्पोज नहीं किए हुए हैं. आर्टिकल नंबर 20. आर्टिकल नंबर 20 डील्स विद द प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस. दिस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन assure protections against arbitrary arrest and the excess punishment to any person who is alleged to have committed an offense. No person shall be punished except for the violation of law which is enforced when the crime was committed. जब तक किसी भी citizens के ऊपर उसका जुर्म लागू नहीं हो जाता, ये साबित नहीं हो जाता कि he or she was a criminal, तब तक कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी चीज उसको सजा नहीं दे सकती, उसको पनिश नहीं कर सकती. दिस इज अ प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस. इन दिस सेंस वी हैव सीज 2 types, the retrospective criminal legislation and the second is the double jeopardy. In retrospective criminal legislation, we can see that it is also known as ex post facto criminal legislation. Under these, a person cannot be convicted for an act that was committed at a time when the act had not been declared by the law an offense. This means that the criminal legislation cannot be given a retrospective effects. Double jeopardy indicates that a person cannot be convicted for the same offense more than one. Prohibition against self-incrimination. This implies that no person accused for an offense shall be compelled by the state to bear witness against himself. Come to the next. This is article number 21. Article number 21 deals with the protection of life and the personal liberty. Article number 21 states that citizens should have a personal liberty. They should have a right to live their own life by their own ways.
This is a personal liberty. Okay. The Supreme Court has interpreted the right to life as a right to a dignified life. This is the most important right in one sense because without this right to life, all other fundamental rights would be meaningless. It is these articles that differentiate between the police states and the constitutional. The next one is in article number 21 को राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन जो है ये ऐड किया हुआ है आर्टिकल नंबर 21A के अंदर. इसके अंदर ये दिखाया गया है कि एवरी citizens, the article was introduced by the 86th constitutional amendment in 2002. Recently, कुछ साल पहले ही राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन को हमने फंडामेंटल राइट्स के अंदर ऐड किया है आर्टिकल नंबर 21A कहकर. ये हमें प्रोवाइड्स करता है कि स्टेट should provide free and compulsory education to all the children between the age of 6 and 14. कि हमने 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे तक फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन देने का फैसला किया है. Come to the next, that is article number 22, protection against arrest and detention in certain cases. This article provides have 3 sub-articles. The first one is any person who is in custody has to be informed as to why he has been arrested. Further, he cannot be denied the right to counsel and advocate. Article number 22 reserved for the arrested individual should be produced before a judicial magistrate within the 24 hours of his arrest. ये आर्टिकल बताता है कि अगर किसी क्रिमिनल को आपने अरेस्ट किया है तो विदिन 24 डेज आपको उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है. आर्टिकल नंबर 22 में थर्ड पार्ट है नो इंडिविजुअल हु हैज बीन अरेस्टेड can kept in custody for more than the period determined by the judicial magistrate. Come to the next, that is a right against exploitation. Article number 23 to 24. Right against exploitation implies that prohibition of traffic in human beings, beggar and the other forms of forced labor. It also implies the prohibition of children in the factories. The Constitution prohibits the employment of children under 14 years age in hazardous conditions. There are 2 articles of the Constitution which guarantees the rights against exploitation. That is article number 23. Prohibition of traffic in human being and the forced labor. इस आर्टिकल के अंदर दिखाया गया है कि traffic in human being and the beggar of other similar form of forced labor are prohibited, and any other contravention of this provision shall be offense punishable in accordance with the law. Article number 23(2). Nothing in this article shall prevent the state from imposing compulsory service for public purposes and imposing such services. The state shall not make any discrimination on the ground only for religion, caste, class, or any of them. Article number 24. Article number 24 is reserved for the prohibition of employment of children in the factories. कि हम किसी भी बच्चे को किसी फैक्ट्री में या किसी हजार्डियस स्पेस के अंदर हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते. अगर हम किसी कम उम्र बच्चे को कोई काम देते हैं, कोई डेंजरस काम देते हैं, कोई फैक्ट्री में काम देते हैं, तो यू आर लायबल फॉर द punishment according to the article number 24. No child below the age of 14 shall be employed to the work in the factory or a mine
or engage in any other hazardous employment. This is the most important article of our Indian Constitution. Okay? ये हमको बताता है कि हमें अपनी कंट्री को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि यही बच्चे हैं जो आगे चल के हमारे कंट्री का मुस्तकबिल बन सकता है. इन्हीं बच्चों को बेसिक एजुकेशन देने के लिए हमने आर्टिकल नंबर 21 राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लागू किया है. Come to the next, that is a right to freedom of religion. Article number 25 to 28. Right to freedom of religion guaranteed to all the Indians by the Constitution to Article number 25 to 28. Article number 25 reserved for the freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. It guarantees that freedom of conscience, the freedom to profess, practice and propagate their religion, कि आप इसके अंदर अपने मजहब को प्रोपोगेट कर सकते हैं. आप आपके मजहब के जो भी अकायद है या आपके मजहब के जो भी रिचुअल्स है, आप उसको फ्रीली एंजॉय कर सकते हैं. ये हमें आर्टिकल नंबर 25 में दिया गया है कि इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस स्टेट. Okay, India is a multi-religious state. There is a Hindus, there are Muslims, Sikh, Christians, and many others residing in our countries. So that Constitution guarantees to every person freedom of conscience and right to protect their religion and propagate their rituals. Okay, Article number 26. Article number 26 reserved for the freedom to manage religious affairs. The right to form and maintain institutions for religious and charitable intents, the right to manage its own affairs in the matter of religion. Every religion has the right to establish and maintain institution for religious and charitable purpose. Each religious group is also free to purchase and manage its movable and immovable property in accordance with the law for the propagation of its religion. Article number 27 deals with the freedom as to payment of taxes for the promotion of any particular religion. There can be no taxes on the proceeds which are directly used for the promotion of maintenance of any particular religious domination. Article number 28 deals with the freedom as to attendance of religious instructions or religious worship in a certain educational institution. This article permits to the educational institution, they can maintain their religious groups to disseminate religious instructions. Come to the next, that is the cultural and the educational rights. Article number 29 or 30. Cultural and educational right. Cultural and educational rights safeguard the rights of linguistic and religious minorities. In this article, you can read all about Articles 29 and 30 of the Indian Constitution. Article number 29. Article number 29, 1, deal with the provides any section of the citizens residing in the India having a distinct cultural language or a script, the right to conserve their cultural language and scripts. Article number 29(2) deals with that the state shall not deny any admission into educational institution maintained by it or those that receive from it to any person based only on race, religion, and caste. These articles guarantees to preserve and maintain and promote their cultural and language. These constitution
allow minorities to establish and maintain educational institution for their own. कॉन्स्टिट्यूशन ने ये हक दिया हुआ है कि कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकता है फॉर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन purposes. It also provides that states shall not discriminate against any educational institution while granting financial aid on the ground that is being run by the minority community. Come article number 30, rights of minorities to establish, administers educational institution. These rights ensure that minorities will be given assistance by the state in the preservation of their language and culture. कि कोई भी minorities अपने culture को, अपने language को preserve कर सकता है. The ideal before the state is to preserve and propagate the composite culture of the country. Right to constitutional remedies, article number 32. Right to constitutional remedies, fundamental rights, if in the constitution guarantees remedies if citizens' fundamental rights are violated, the government cannot infringe upon or curb anyone's rights. Okay. Part 3 of the Indian Constitution provides for the legal remedies for the protection of these fundamental rights against their violation by the state, institutional, individuals, and any others. The citizen of India to move the Supreme Court or High Court for the enforcement of these rights. The Constitution empowers the Supreme Court and High Court to issue order or writs. कुछ ऑर्डर्स और रिट्स जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं ताकि फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व कर सके. उसमें सबसे पहला है हैबियस कॉर्पस. हैबियस कॉर्पस ये एक लैटिन वर्ड है. It is an order by the court to state to produce the person physically before it justify the confinement or release of a person. Next is a mandamus. Mandamus also the Latin word. It is command or an order from a superior court to a subordinate court or tribunal or public authority to perform its duty in case not doing it. The next is a prohibition. It is an order issued by the superior court to forbid subordinate court to tribunal from proceeding with the case which is beyond its jurisdiction. Quo warranto, it's also these writs is issued to restrain a person from acting in a public office to which she is not entitled. Or certiorari. The term certiorari means to be informed of what is going. It is an order to lower court from superior court to transfer the matters it or any other court for deciding matters. This is a constitutional remedies and it is a very important part of our fundamental rights because it guarantees and it saves our fundamental right from the encroachment of the others. These are the 6 fundamental rights which described in our presentation. Come to the next, that is the importance of fundamental rights. कि fundamental rights क्यों importance है? What was the reason? उसकी importance क्या है? सबसे पहले fundamental rights are very important because it is a backbone of our country. अगर फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर नहीं रहते थे तो सिटीजन सेटिस्फाइड नहीं होते थे गवर्नमेंट से. ये हमें एश्योरिटी देता है कि वी आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. ओके, दे आर एसेंशियल फॉर सेफगार्डिंग द पीपल इंटरेस्ट. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 13, all laws that are violative of fundamental rights shall be void. There is an express provision for the judicial review. The Supreme Court and High Court can declare any law unconstitutional on the ground
that is violate of the fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स के अंदर अमेंडमेंट हम कर सकते हैं, उसके लिए प्रोसीजर होता है. एनी चेंजेस टू द फंडामेंटल राइट्स रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देयर that should be passed by both of the houses of the parliament. हमारे पास के जो दोनों houses है वो houses से पास होकर गुजरता है. The amendment bill should be passed by the special majority of the parliament. It is a procedure of the amendment in the constitution. At last, conclusion, the overall presentation, I have to conclude that the fundamental rights play a very significant role in the life of a citizen. It is a soul of our constitution. These rights can be defended during the time of complexity and difficulty and help us citizens to grow. It give a right platform, or it give a mature platform to the citizens to grow. It build a humanity among the citizens. ये जो fundamental rights है ये citizens के अंदर human qualities को build करता है और एक good human beings बनाता है. And that's why all rights are the needs for the people or needs of the people. अगर ये फंडामेंटल राइट्स अगर हमें दिए हुए नहीं होते थे तो हम अपने गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं रहते थे. बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो हमारे माइंड में चलते थे. ये फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती है. ये राइट्स है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हुए हैं और इसके बदले में देने के लिए हमारे कुछ ड्यूटीज भी होती है जो हमें देना होती है, जो एज अ सेम टू साइडेड ऑफ अ सेम पॉइंट हम इसे कह सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. ओके, थैंक यू. नमस्ते मैडम. बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने फंडामेंटल के बारे में जो जानकारी दी है, क्योंकि जो साइंस के क्षेत्र से मैं अध्ययन करते हैं उनको तो बिल्कुल ही मालूम नहीं रहता. आर्ट साइड से पढ़ते हैं उनको कुछ मालूम रहता है. तो एक तो बहुत बहुत धन्यवाद. दूसरा मैडम, मेरा एक ये सवाल है कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो हमें एक वकील की जरूरत पड़ती है. शायद अगर हमें कोर्ट में जाना होगा तो क्या सरकारी वकील करना होगा या फिर अपना खुद का वकील? एक तो ये सवाल है. दूसरा सवाल ये है कि जो विश्व मानवाधिकार है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारे फंडामेंटल है, तो इनमें मतलब आप कैसे देखते हैं इन दोनों को? मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कंपेयर में कितना अच्छा है या कैसा है मानवाधिकार को लेकर? मानव जो हमारे अधिकार है, जो फंडामेंटल है, बेसिक अधिकार है, इनको लेकर. ह्यूमन राइट्स. जी 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 सर, देखिए सबसे पहले तो ये कि हमें फंडामेंटल, अगर हमारे राइट्स कहीं पर वायलेट होते हैं, किसी से भी अगर राइट्स वायलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में उसकी अपील कर सकते हैं. इसके लिए आप किसी भी वकील को हायर कर सकते हैं. आप अपना उसके अंदर अगर कोई राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो. और दूसरी बात ये कि ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स ये जो है ये सिमिलर है सर. फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स, बहुत सारे ऐसे जो राइट्स है ह्यूमन राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स में मौजूद है. अगर आप यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स कमीशन की देखते हैं तो उसके अंदर हमको ये सारी चीजें उसमें दी हुई रहती है. कुछ चीजें, कुछ राइट्स ऐसे हैं जो हमने अपने कंट्री को देखकर बनाए हुए हैं. क्यों? क्योंकि हमारा कंट्री जो है एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है, मल्टी कास्ट यहाँ पर मौजूद है, अलग अलग जात के, अलग अलग धर्म के मौजूद है. इसलिए हमने कुछ चीजें ऐसी है जो अपने कंट्री के एटमॉस्फेयर को देकर, अपने कंट्री के स्ट्रक्चर को देकर उसके अंदर इनबिल्ट की हुई है. ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो प्रोसीजर है सर, ये बहुत लेंथी था. हमने जस्ट एज अ सडन इसको नहीं बनाया.
हमने पहले तमाम कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सी चीज मौजूद है और वो हमारी कंट्री के लिए कितनी सुटेबल है। ठीक है सर, तो ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स ये जो है ये नियर अबाउट है सर, बिल्कुल सेम है। धन्यवाद मैडम। मैडम मेरा ये भी सवाल था कि वकील जो वकील रहते हैं तो बहुत सारे लोग वकील की फीस और हायर करने से पीछे हट जाते हैं, यानी उल्लंघन होने देते हैं। तो क्या ऐसा भी प्रावधान है कि सरकारी वकील मिल जाए, फीस देनी न पड़े किसी जो जिसके साथ उल्लंघन हुआ है उसका अधिकारों का? तो यही हमारी समस्या है कि बहुत सारे लोग नहीं जाते कोर्ट तक कि कहाँ इन झमेलों में पड़ेंगे, वकील की फीस देनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। तो क्या सरकारी वकील का प्रावधान है कुछ, अगर इसके बारे में बताइए। सरकारी वकील का प्रावधान तो है सर, लेकिन फिर भी आपको उसके लिए एक वे होता है, उस वे को आपको पास आउट करना होता है। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक Yes. 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 जी सर। जी सर। जी सर। Yes. Yes sir. Okay. Yes sir. जी सर, of course sir. Very. जी सर, जी सर, जी सर। सर ने बहुत मोटिवेट किए हैं हम लोगों को इस तरह के वेबिनार्स में पार्टिसिपेट करने के लिए सर। यस सर। सर ये बहुत बड़ी बात है सर कि आपने इतनी बड़ी रिकॉर्ड सीरीज की, और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है सर आपकी सीरीज में कि हर एक फील्ड का एक लेक्चर है सर। तो इसमें कैसा होता है कि हर एक फील्ड के बंदे को हर एक चीज की नॉलेज हो जाती है, फिर वो साइंस का रहने दो, आर्ट्स का रहने दो, या किसी भी फील्ड का रहने दो, हर एक चीज की उसके नॉलेज हो जा रही है। बहुत बड़ी बात है सर, अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू सर। जी सर। जी सर, जी सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आज प्रशांत सर की कमी है सर।